Very good afternoon to the eminent dignitaries on stage, our Honorable Minister, Secretary, Department of Administrative Reforms and Public Grievances, and Department of Pension and Pensioners' Welfare, Secretary, Railway Board, Director General, National Archives of India, Principal Director General, PIB, PG, our esteemed nodal special campaign officers, and the nodal public grievance officers of all the central ministries departments, the distinguished senior officials and everyone present in this hall, and the respected members of press and media. It is indeed a great privilege for me today to anchor and welcome you all to the launch event of the web portal of Special Campaign 3.0. The chief guest for the event today is Dr. Jitendra Singh, Honorable Minister of State, Independent Charge of the Ministry of Science and Technology, Minister of State for Ministry of Personnel, Public Grievance and Pensions, Minister of State for the Department of Atomic Energy, and the Department of Space. Before we begin, we would like to welcome our Honorable Minister with a bouquet. I would request Secretary DARPG and Department of Pension and Pensioners' Welfare to kindly present a bouquet to the Honorable Minister. Thank you, sir. It is believed that lighting of the lamp brings prosperity, welfare and positivity around us for new beginnings. So, I would now like to request the dignitaries on stage to proceed for the lighting of the lamp. As the dignitaries partake in the traditional lighting of the lamp, let each one of us light the lamp of cleanliness in our thoughts and our actions for institutionalizing Swachhata during this special campaign 3.0. The special campaign to be launched today is going to be responsible for motivating cleanliness and enabling productive use of the spaces cleared. So let us unite and live the words of our Honorable Prime Minister, Swachhata ही सेवा है, आंदोलन, अभियान मिलकर बनाए हम. I would now like to request Secretary, Department of Administrative Reforms and Public Grievances and Department of Pension and Pensioners' Welfare, Shri V. Srinivas ji, to kindly give the welcome address. Respected Dr. Jitendra Singh ji, our Honorable Minister for
Personnel, Public Grievances and Pensions, my distinguished colleagues, Secretary Post, Shri Vinit Pandeyji, Director General, National Archives of India, Shri Arun Singhal-ji, Secretary Railway Board, Shri Milind Dioskarji, Principal Director General, PIB, Shri Manish Desai-ji, Joint Secretary DRPG, Srimati Jaya Dubey-ji, nodal officers of the campaign who are largely additional secretaries and joint secretaries in the ministries, distinguished participants and colleagues from the media, and senior officials of DRPG. It is indeed a great privilege for me to welcome Dr. Jitendra Singh Sahab for the launch of the Special Campaign 3.0 portal. And it has been the mandate of the Department of Administrative Reforms and Public Grievances to conduct the special campaign as the nodal department of Government of India for the last 3 years. So I will take you through a brief journey of the PowerPoint presentation of the department's experiences in conducting the special campaign. Can we go to the first slide? First slide. Next, please. The special campaign has been undertaken under the leadership and guidance of the Honorable Prime Minister, and with the objective of institutionalizing Swachhata and minimizing pendency in government. The response that we have had in the last 3 years has been phenomenal. In the first year, the campaign was held in 6,154 sites, and a number of innovations had come up. For example, in the Department of Posts, a cafeteria was created and called Firangi Pani. Similarly, a wellness center was established in the Department of Telecom. A Rejuve Yoga Center was established in the Department of Land Resources. And not only did we find a number of improvements in office spaces, but also a lot of protocols and reduction in pendency was witnessed. We freed about 12 lakh square feet of office space from files as also outdated furniture, and earned a revenue of about 100 crores from the special campaign 1.0. Next, please. Encouraged by the huge success of special campaign 1.0, the government launched the special campaign 2.0 from October 2nd to October 31st, 2022. And this was to be taken up on a larger scale. The Honorable Prime Minister and the Council of Ministers decided that it will be held in the remotest parts of India, in departments which have large public interface, and the objective would be to reach to the last mile to ensure that the experience of the citizen in interacting with government is an aesthetically pleasant one. The work atmosphere is very conducive for government officials to have highest efficiency. So it was held in 101,000 offices across Government of India, and it is a phenomenal success in that 90 lakh square feet of office space was created. Further, 370 crores of revenue was earned. The files weeded out between Special Campaign 1.0 and 2.0 crossed over 50 lakhs. So we were carrying so many additional physical files, and vast amounts of paper could be disposed of. Encouraged by the success of the Special Campaigns 1.0 and 2.0, next please, government instituted this on a monthly basis, and the Department of Administrative Reforms has published a number of reports for monthly reports on the campaign. In the last 8 months, the special campaign has freed about 83 lakh square feet of office space, 142 crores of revenue has been earned, and more than 9 lakh physical files have been weeded out. Further, next please. This is the cumulative progress of the special campaign that we can see. And one of my undersecretaries told me, sir, without spending even a rupee, government has earned 600 crores of revenue from this special campaign in disposing of office scrap, largely for outdated photocopiers, equipment,
that was unused, and huge amount of non-ferrous scrap was disposed of. 184 lakh square feet of office space has been freed, and 68 lakh files have been weeded out. Next, please. The cumulative, in terms of reduction in pendency also, that can be seen, 40 lakh public grievances have been disposed, about 40,000 MPs references have been disposed, and a very large number of PMO references, interministerial references, which are cabinet notes, and state government references have been disposed of. Next, please. The special campaign 3.0 will be held from October 2nd to 31st. This is the preparatory phase from September 15th to 28th, in which pendency will be identified. All record rooms will be vacated and files handed over to the individual sections to identify them in A, B, C categories. Those for weeding out will be identified. E-files for closure will be identified. The pendency with references to MPs references, parliamentary assurances, PMO IDs will also be identified. Next, please. These are the big thrust areas. We find huge changes in terms of digitization. 90% of the central secretariat is currently on e-office, and efficient management of office spaces. There are hardly, you'll find a lot of decluttered office spaces. Enhancement of office spaces. You can see the CBDT's Aranya corridor that has been developed. Next, please. Then there have been number of environmental friendly practices. For example, Ministry of Railways introduced power cuts. The automatic power supply was taken off on computers during lunch hour. Then the Swachh ATM that was introduced opposite Nirman Bhavan can be seen. Inclusivity measures for disabled friendly toilets, as also incinerators in ladies' toilets were introduced. Protocols for in terms of cleaning of office spaces were introduced. Next, please. And we are greatly enthused by the response we have received from the ministries. We found that the special campaign 2.0 was 17 times larger in space, larger in terms of number of sites, 7 times larger in terms of space freed, and 6 times larger in terms of revenue earned. So the targets that we have set for ourselves in special campaign 3.0 is 1.5 lakh office space, 1.5 lakh cleanliness sites to be taken up, 100 lakh square feet of office space to be freed, and about 400 crores of revenue to be earned. Next, please. So let me once again welcome the Honorable Minister, Dr. Jitendra Singh ji, and our distinguished colleagues, Shri Vineet Pandey ji, Shri Arun Singhal ji, Shri Milind Doskar ji, and of course Manish Desai ji, and congratulate all the officials present here on this yeoman efforts. Today is the start, and over the next 45 days, I'm sure we'll see significant success stories. Thank you very much. Thank you, sir, for your warm welcome address and a very insightful presentation. As a token of our gratitude, we would now like to present a precious memento of historical value to our Honorable Minister, which has been conserved during the Special Campaign 2.0, titled Secretariat Reorganization Committee, dated 10th August 1947. I would request Secretary DARPG and Department of Pension and Pensioners Welfare, Shri Srinivas ji, to kindly do the honors. So we'll just give a background of this document. Last year, the Honorable Minister had taken a visit of the round of the DRPG office, and during the visit of the library, he chanced to see a document of 10th August 1947, the first report of a group of secretaries on reorganization of the Central Secretariat. That was the report. Dr. Jitendra Singh Sahab had asked us to conserve the report and also transfer the report to the National Archives of India to place it on the Abhilekh Patal. We have placed the report. That report, the Cabinet Secretary had requested that he is quite overburdened, and the post of establishment officer should be created so that
efficient functioning of personal administration can be handled by the establishment officer. So that was what led to, on the eve of independence, 4 days before independence. So we have curated it in honor of the minister, and we are grateful that for his guidance, and we have transferred it on Abhilekh Patal for general viewing also, sir. It was a confidential report. It was declassified and placed for public consumption. I think one of the earliest correspondents in the government, before the government took over. I would like to invite everyone now to watch a film on special campaign and witness the campaigns that were conducted in the last 2 years, which should inspire us to deliver another path-breaking and successful campaign this year. आप सब जानते हैं कि पहले सरकारी दफ्तरों में पुरानी फाइलों और कागजों का कितना ढेर रहता था। जब से सरकार ने पुराने तौर तरीकों को बदलना शुरू किया, ये फाइल्स और कागज के ढेर डिजिटाइज होकर कंप्यूटर के फोल्डर में समाते जा रहे हैं। जितना पुराना और पेंडिंग मटेरियल है, उसे हटाने के लिए मंत्रालयों और विभागों में विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इस अभियान से कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जब ये सफाई अभियान चला, तो वहां का जंकयार्ड पूरी तरह खाली हो गया। अब इस जंकयार्ड को कोर्टयार्ड और कैफेटेरिया में बदल दिया गया है। स्वच्छता को सरकारी कार्यालयों और विभागों में लाने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में 2021 में शुरू हुआ विशेष अभियान 1.0, जिसमें लाखों फाइलों का डिजिटलाइजेशन और फिर डिस्पोजल कर उनसे छुटकारा पाया गया और दफ्तरों में फैले अनुपयोगी सामानों को हटाकर कार्यस्थलों को स्वच्छ व सुंदर बनाया गया। इसके अंतर्गत करोड़ों रुपयों का राजस्व भी प्राप्त हुआ। हमारा सेक्शन बहुत अच्छा साफ है, जगह मिलता है और साफ सुथरा है। उसके साथ साथ हमारा मन भी साफ सुथरा रखे काम करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पहले इतनी सारी फाइलों का ढेर लगा रहता था, ऑफिस में घुसते इतना स्ट्रेस फील होता था कि हमें इतना सारा काम करना है। लेकिन स्वच्छता अभियान के दौरान जो हमने प्रयास किए, उनके दौरान स्पेस आउट हो गया, हमारा रूम एस्थेटिकली इतना प्लेजेंट हो गया है। 2022 में संकल्प और सफलता की इस गाथा को विशेष अभियान 2.0 के रूप में फिर दोहराया गया। ये अभियान 2021 की तुलना में 17 गुना ज्यादा प्रभावशाली रहा। 2.0 में 1.0 के मुकाबले पहले से 7 गुना ज्यादा जगह बनाई गई और 6 गुना ज्यादा राजस्व अर्जित किया गया। लाखों लंबित शिकायतों और संस्तुतियों पर सुनवाई हुई और उनका समुचित समाधान उपलब्ध कराया गया। पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा व्यापक भागीदारी के साथ देश के लगभग सभी मंत्रालयों, उनके विभागों और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अंतर्गत भारतीय डाक विभाग ने 24,000 साइट्स पर, गृह मंत्रालय ने करीब 11,500 जगहों पर, रेल मंत्रालय ने 9,374 रेलवे स्टेशंस पर, वहीं रक्षा मंत्रालय ने 5,922 स्थानों पर ये मुहिम चलाई। रेल मंत्रालय द्वारा बंगलुरु स्टेशन पर प्लास्टिक राक्षस का निर्माण, कोलकाता में डाक विभाग का पार्सल कैफेटेरिया, सीवर्स की सफाई के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का रोबोट्स का इस्तेमाल या कोयला मंत्रालय द्वारा गार्बेज को गार्डन में बदल देना, ऐसे अनूठे उपक्रम स्पेशल कैंपेन 2.0 में देखे गए।
ये अभियान अब केवल कुछ दिनों या हफ्तों तक चलने वाला कार्यक्रम नहीं रहा है, बल्कि एक सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया बन चुका है, जिससे प्रेरित होकर अनेक मंत्रालय एवं विभाग भी सक्षमता और नवाचार के नित्य नए नए उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। 2022 के विशेष अभियान 2.0 के बाद अब तक 8,91,755 फाइलों के निस्तारण के साथ जनता की 27,01,404 शिकायतों पर कार्रवाई की गई है। 36,177 साइट्स पर चलाए गए इस कैंपेन में स्क्रैप की बिक्री से 141.13 करोड़ रुपयों का राजस्व भी प्राप्त हुआ। 2021 से अब तक कुल राजस्व लगभग 600 करोड़ हो चुका है और आने वाले विशेष अभियान 3.0 के लिए अब लक्ष्य है 1.5 लाख साइट्स की स्वच्छता, 100 लाख स्क्वायर फीट जगह बनाना और 400 करोड़ रुपयों की राजस्व की प्राप्ति। विशेष अभियान 3.0 को 2 चरणों में बांटा गया है। 15 सितंबर से प्रारंभ हो रहे प्रिपरेटरी फेज में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, लंबित मामलों की पहचान, अनुपयोगी सामान के डिस्पोजल और खाली हुई जगह के सौंदर्यीकरण की योजनाएं बनाई जाएंगी। वहीं 2 अक्टूबर से दूसरे यानी इम्प्लीमेंटेशन फेज का आगाज कर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। विशेष अभियान 3.0 के सफल क्रियान्वयन के लिए DARPG ने विशेष पोर्टल भी लॉन्च किया है। संपूर्ण तैयारी, सतत निगरानी और नियमित समीक्षा, ये वे 3 चरण हैं जो विशेष अभियान 3.0 की सफलता की गाथा में एक नया अध्याय जोड़ेंगे। विशेष अभियान ने आज सरकारी कार्यालयों की पूरी तस्वीर बदल दी है। ये एक नई पहचान है जिसमें नजर आते हैं चमकते दमकते कार्यस्थल, कर्मठता और सक्षमता से भरपूर कर्मचारी। विशेष अभियान 3.0 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023। As we saw, Department of Posts conducted the special campaign 2.0 in over 24,000 sites last year, which led to over 1 lakh square feet space being freed. So, it is indeed my privilege to invite Secretary, Department of Posts, Shri Vineet Pandey ji to kindly address the audience. Honorable Minister Sir, my colleagues and representatives on this mission from the dais and the hall, गत वर्ष इसी मंच पे माननीय मंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हुआ था और तब एक सोच साझा किया था सर कि इस पूरे अभियान को जो केंद्र सरकार का है और डिपार्टमेंट ऑफ ARPG द्वारा निष्पादित है, जैसे योगा में एक इंटरनलाइजेशन और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ, वैसा ही प्रयास, वही उसी मार्ग दिशा पे हम चलें। और आज ये सब संभव होता देख के और इस विभाग को एक अवसर मिला इस केंद्रीय कार्यक्रम में आयोजन होने के लिए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सीइंग इज बिलीविंग, तो जैसा कि अभी आपने इस वीडियो फिल्म में भी देखा था कि शुरुआत घर से होती है। तो सबसे पहले हमने डाक भवन से शुरू किया था वर्जन 1 और वर्जन 2 में, और जैसा कि आपने देखा फ्रॉम जंकयार्ड टू कोर्टयार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, और अब वहाँ पे एक आंगन हमने एक नई व्यवस्था पैदा कर दी है जिसका उपयोग कर्मचारी भी करते हैं। कुछ खास आयोजनों पे वहाँ पे सम्मेलन इत्यादि भी होता है और इसकी कवरेज आपने पिछले वर्जन्स में देखी थी। इसी प्रकार से जो अप्रोच था पूरा डाक भवन का, उसमें सारा डीक्लटर करके उसके पूरे सरकमफेंस को एक्सेसिबल बनाया गया। और जो सोच वाली बात मैंने कही, ये चीज़ें हम बरसों से देख रहे थे और वो हमें पता था कि हमें इतना भी नहीं पता है कि हमारे बिल्डिंग के पीछे और नीति आयोग के बीच की जो जगह है वहाँ से हम पास नहीं कर सकते इन केस ऑफ सपोज एनी इमरजेंसी और समथिंग। थैंक्स टू दिस मिशन एंड थैंक्स टू दिस अपॉर्चुनिटी द होल एरिया हैड बीन क्लियर्ड, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के अभी आपने अभी उन्होंने संदेश दिया उसमें देखा, इसके लिए हम आभारी हैं, इस प्रोत्साहन के लिए आभारी हैं। उसी सिलसिले में चलते हुए अगर हम आगे देखें तो ना सिर्फ इम्प्रूवमेंट ऑफ लुक एंड फील होता है,
जो एक जनभागीदारी, एक अवेयरनेस कायम हो रही है, उसके मैं कुछ आपको मिसाल दिखाऊंगा। और इसमें जो एक क्रिएटिव एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे जैसे हम बढ़ते गए इस मिशन में आगे, नए नए आइडियाज़ मिलते गए, हमने प्रशासनिक विभाग से संपर्क किया, हम लोग आपस में बैठे और जो नई नई क्रिएटिविटी निकल के आई हैं, उसका एक उदाहरण ये बहुत ही रीसेंट है। अभी 7-8 दिन पहले मैं राजस्थान के एक्सटेंसिव फील्ड विजिट पे था और आबू से निकलता हुआ देखा, तो ये जो छोटा सा प्रयास वहाँ हुआ था उसको उन्होंने एक्सपेंड कर दिया है। अब ये एक विजिटिंग सेंटर बन गया है जहाँ पे टूरिस्ट आकर के थोड़ी देर रुकते हैं और देखते हैं कि ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये नई बिल्डिंग बनाई गई है। इट वॉज सो हार्टनिंग टू सी दैट थिंग्स आर ट्रिकलिंग डाउन टू द फील्ड लेवल ऑल्सो। और मेरा और हम सबका ये मानना भी है कि इस तरह के प्रयासों को देखते हुए कई प्रदेशों में जिला प्रशासन ने भी इस तरह के जो भित्ति चित्र के माध्यम से या पेंटिंग के माध्यम से लोकल कल्चर, लोकल आर्टिजन्स का इन्वॉल्वमेंट और जो एक विजिबिलिटी है उस प्रदेश की या उस जगह की, वो अपने आप निखर के सामने आ रही है थ्रू वेरियस स्पेस अवेलेबल। और कोई इसमें बेसिक मेजर खर्चा या डिफरेंस नहीं है। वाइट वॉश पेंटिंग हम कराते रहते हैं, मगर ये आइडिया, इसके लिए हम आभारी हैं इस इनिशिएटिव के। इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं राजस्थान के, कर्नाटक के। इनफैक्ट जो ले सिटी पोस्ट ऑफिस में ये पॉइंट है, ये सेल्फी पॉइंट बन गया है और जो हमारे पर्यटक हैं वो अक्सर आकर के यहाँ, आप कभी भी जाएंगे आप देखेंगे कि ये जो रूपांतरण हुआ है, द लुक एंड फील, कि ना सिर्फ एक टिपिकल सरकारी दफ्तर है, मगर वहाँ जाके एक पहला अप्रोच, एटलीस्ट आगे तो काम और सेवा वो अलग है जो पोस्ट ऑफिस के अंदर होगी, बट एक जनरल माहौल एक ऐसा बनता है, one feels good and takes pride in such government institutions. So this was a small initiative which has now kind of, our focus in the next attempt will be to take it out further. जिक्र किया अभी पार्सल कैफ़े का जो कोलकाता में हुआ सेक्रेटरी साहब ने। अब इसकी खासियत ये है कि ये जो आप बीच में टेबल देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ सॉर्टिंग टेबल हुआ करता है पुराना, जिस पे बैग पलटे जाते हैं। उस तरह की चीज़ों को या उस तरह के फर्नीचरों को ला करके और उनको रीयूज़ करके, और ये स्पेस भी रिक्लेम किया गया है। आइडिया इज़ कि जब कस्टमर वॉक इन कर रहा है और उसको थोड़ा टाइम लगेगा अपने काम को करने में, पार्सल बुक कराना है या और भी किसी काम के लिए आ रहा है, तो वहाँ पे वो कुछ देर बैठ सकता है और इस तरह से इस स्पेस का रीयूटिलाइजेशन हुआ है। सो दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल, वी विल टेक इट फर्दर। एक बड़ी बात निकल के आई, अगेन उसी सोच की बात, हमने सोलर पैनल्स लगाए हुए थे, लेकिन जब ये निकल के आया कि भाई इन सब का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए, इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एनर्जी कंजर्वेशन होना चाहिए, सबसे पहले हमने डाक भवन से शुरू किया। एंड द ऑफिसर कंसर्न इज सिटिंग हियर हु हैड टेकन दिस इनिशिएटिव, मिस्टर अमन शर्मा। और हमने देखा कि अपने 1.5 सालों में ही हमने जो सेविंग्स करी है बिजली के अकाउंट पे, और प्लस जो नॉर्मल क्लटर है वो, इसको हम आगे रेप्लिकेट करेंगे पोस्ट ऑफिस, एटलीस्ट हेड पोस्ट ऑफिस तक, हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स तक। वहाँ पे हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इससे जो बचत होगी उसकी वजह से हम और कितना उसके रिफर्बिशिंग के लिए या उसके रख रखाव के लिए हम उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। So this is another initiative which has come out from this mission only. Third thing, which later, on the later part of the version 2, we realized कि जब हम सब कुछ देख ही रहे हैं तो normally क्या है कि रेल और डाक का संबंध है। हमारे रेलवे स्टेशनों पे रेल डाक सेवा होती है जहाँ बैग्स बनते हैं, बैग्स बांधे, वो पुरानी चपड़ी, धुआं, एक बड़ा ही टॉक्सिक माहौल, ये कटक। मैं आयुष कुमार, सॉर्टिंग असिस्टेंट। पहले जो हम सीलिंग वैक्स यूज करते थे उससे बहुत धुआं निकलता था और काम करने में तकलीफ होती थी, काम भी स्लो होता था। लेकिन आज जो हम प्लास्टिक बैग यूज करते हैं वो रिसाइक्लेबल होता है और उससे पॉल्यूशन भी कम निकलता है और इससे हमारा समय का बचत भी बहुत होता है और ये क्लोज करने में भी जल्दी क्लोज हो जाता है। तो वो जो लाख और चपड़ी और धुआं वाला ज़माना था, अब ये बायोडिग्रेडेबल सील, ये ट्रिगर भी हमें इसी इनिशिएटिव से मिला, तो इसको हम एक्सपैंड करेंगे। दिस इन समरी हैज़ ऑलरेडी बीन कवर्ड बाय इन द प्रेजेंटेशन गिवन बाय सेक्रेटरी आरपीजी। तो दूसरा है जैसे कॉल सेंटर्स जो डिस्पोजल हैं कंप्लेंट्स के, तो एक मॉडर्न आउटलुक का बनारस में भी स्पेस रिक्लेम करने के बाद साफ सफाई करके एक सेंटर खोला गया है वहाँ पे भी, एंड दिस इज़ वर्किंग वेरी फाइन, जिसके वजह से हमारा जो डिस्पोजल रेट्स है इट इज़ टू द सेटिस्फैक्शन
of the superintendents, I would say, monitored by ARPG. So ये अपना एक अलग प्रयास है कि वो अब एक हैबिट सी बन रही है कि हर periodically, not only that during the mission or something, every 3 months we must see, have a relook as to where do we stand. The disposal rates have gone up like anything. Yes, जब ये मिशन शुरू हुए 3-4 साल पहले तो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बहुत तेज़ एकदम से बढ़े ऑन वेरियस फोरा, बट डिस्पोजल होने के साथ साथ क्या हुआ कि अब वो भी स्टेबलाइज हो गए हैं. एंड नाउ देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ, नॉट दैट आई बिलोंग टू द डिपार्टमेंट एंड आई एम काइंड ऑफ सेल्फ पैटिंग, बट द फैक्ट रिमेन्स कि वो स्टेबलाइज हुए हैं और लोगों को कॉन्फिडेंस आया है, खास करके जो सोशल मीडिया में ट्रिगर्ड उनके ऑब्जर्वेशंस और कंप्लेंट्स हैं उनका निष्पादन हो रहा है. ये सारा इस पूरे आयाम में, इस पूरे ब्रॉड कैनवस ऑफ दिस मिशन, ऑल दीज थिंग्स हैव गॉट फिट इन. दिस इज व्हाट वी वांटेड टू कन्वे. दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर दैट. Thank you, sir, for taking us through all the interesting initiatives taken up by the Department of Posts in the Special Campaign 2.0. The Ministry of Railways in the Special Campaign 2.0 was responsible for earning a total revenue of rupees 33 crores and weeding of over 63,000 files. So, it is indeed a pleasure to request Secretary Railway Board, Shri Milan K. Deoskar ji, to kindly address the gathering. Respected Dr. Jitendra Singh, Honorable Minister of State, Independent in Charge Science and Technology, Minister of State, PMO, Minister of State, Ministry of Personal PG and Pensions, Minister of State, Department of Atomic Energy and Department of Space, Secretary DARPG, Secretary Department of Posts, DG National Archives, DG PIB and other senior officers of all the ministries of the government. Ministry of Railways really did very well in Special Campaign 2.0 by clearing highest volumes of pendency, and Indian Railways is geared up to meet aims of Special Campaign 3.0 with a special focus on redressing public grievances and undertaking special cleanliness drive across the railway network. We intend to promote innovations to get the effective output from the campaign. Next slide. As a matter of this innovation only, the Ministry of Railway has developed a robust system of Rail Madad, a unified IR portal for grievance redressal. This digital platform allows ease for the customers to lodge their grievances from multiple channels like Helpline 139, web portal, mobile app, social media, and there is a system of auto complaint assignment to the right person for resolution of complaint. And in case those complaints are not resolved within the stipulated time, then there is a escalation matrix and the complaint is escalated to the higher level of officers. This average disposal time throughout 24/7, average disposal time has been brought to less than 2 hours, and we have received excellent and satisfactory feedback from our passengers to the extent of 68%. Next slide. We have performed also very well in the CP grams, where our average disposal time for the grievances has been 13 days, and we have disposed all the appeals in time. Next. At top management level, all the patterns of the complaints, the bad cases of Rail Madad and CP grams are analyzed regularly for systemic improvements to bring down grievances and improve response time for the grievance redressal. A system for cleanliness has been institutionalized over Indian Railways. Based on the passenger footfall, mechanized cleaning with suitable waste management provisions have been put on place on sound footing at more than 7,000 stations.
On the top of it, IR is working on beautification of stations and giving systemic inputs to create world-class stations. Under Amrut Bharat station scheme, 1309 stations are being developed. Recently, Honorable PM laid foundation stone for 508 stations and work is in advanced stage. LHB coaches and Vande Bharat trains are being inducted to create better experience. Next. I also want to highlight that since the launch of Swachh Bharat mission on 2nd October 2014, IR has continuously improved on a systemic basis, and the systems and practices adopted on Indian Railways has stood the test of quality audit of all the third-party agencies. In the office management area also, e-office has been implemented all over the zones, divisions, and lakhs of files have been recorded, weeded out, and this process is continuing. And in the last year, we created a space of 14,000 square feet, and we expect that in campaign 3.0, this process will be taken to a next level. Further, progressively complete working of IR is also being digitized. With an aim to undertake an effective special campaign 3.0, 110 nodal officers have been appointed. Awareness campaigns, social media campaigns, and optimum utilization of office premises are the few steps will be undertaken in this special campaign. The Railway Board has issued directions to all the zonal railways for a very proactive action to run the campaign. I am sure that once this special campaign portal will be launched, the monitoring of the campaign will be streamlined further. Thank you very much. Thank you, sir, for sharing the success stories and the best practices adopted by Ministry of Railways in the Special Campaign 2.0. Notable outcomes of the Special Campaign 2.0 is that it has reinforced record management practices in the government and plays an extremely important role regarding weeding of files during these special campaigns. It is in this context that I would now request Director General, National Archives of India, Shri Arun Singhal ji, to say a few words and address the gathering. Honorable Minister of State, Dr. Jitendra Singh, Secretary DRPG, Mr. B. Srinivas, dignitaries on the dais, and all the people present here today. We are all aware that one of the first calls, next slide please. Next slide please. We are all aware that one of the first calls given by the Honorable Prime Minister after assuming office was about Swachhata. And under the able leadership of Dr. Jitendra Singh and Mr. B. Srinivas in the department, DRPG has really taken this forward in all government departments. These achievements have been talked about, so I will not repeat them again, but these are humongous achievements and we must applaud the department for making this progress. It's a wonderful effort by them. It is said that cleanliness is next to godliness. And when we talk of cleanliness, I'm not talking only of the mind or the body, but the entire environment in which we function. Everything should be clean. It's part of the mission lifestyle for environment, mission life also. And sometimes we tend to lose sight of the fact that if you look at the awake hours we spend in life, a majority of them are spent in office today. More than half of the awake time we spend in office, and therefore cleanliness in the office is extremely, extremely important. So, but in the context of record management, it's not only godliness, there's a legislative requirement also for maintaining records properly. Next slide, please. The Public Records Act of 1993 stipulates that all records have to be maintained properly, they have to be administered properly and preserved properly. And most of you must be aware that there's a mandatory requirement in the Act that at the end of 25 years, all permanent records have to be transferred to the National Archives of India. So every central government department is obliged to offer documents to the National Archives of India at the end of 25 years for appraisal. We go out and appraise these records and we decide which is of national importance.
we take those records and we allow the department to destroy the remaining records. So by and large, the percentage of records we take is 3 to 5% only, the remaining are destroyed. But these are of historical importance, significance to the nation. They are preserved with the National Archives of India. Next slide, please. So for management of records, what we need from every department, every record creating agency is that first of all, you should designate a records officer in your agency, in your organization. That records officer should be provided training. We provide this training and that we tell them how to maintain records, how to appraise records. There should be a record retention schedule in every office, which is supposed to be drawn up in consultation with the National Archives of India. And according to that record retention schedule, there should be regular weeding out of documents. Regular declassification of documents should take place. I must clarify here that only declassified documents are sent to the National Archives of India. Classified documents are not. However, there are departments, even in the Cabinet Secretariat and the PMO, where there are classified records which are very old, and we do provide assistance to them in preserving those records. So we go out and help them out in this. At the end of 25 years, records are supposed to be handed over to the National Archives. National Archives have specialized knowledge of maintaining records, repairing them, restoring them, and keeping them safe. And we keep them in custody for the department which gives us the record. So if you want the record back at any time, it's available. But we'll just take good care of it, so it's necessary that you send them to us at the end of 25 years. Next slide, please. अब जो चीज़ें आप लोगों को करनी चाहिए वो यहाँ पे समराइज्ड हैं कि रिकॉर्ड ऑफिसर होना चाहिए हर विभाग में, एक रिकॉर्ड रूम होना चाहिए, उसका रेगुलरली इंस्पेक्शन करना चाहिए, मेंटेनेंस उसमें करी जानी चाहिए। रिकॉर्ड का आप फिजिकली इंस्पेक्शन करेंगे तो दिखाई दे जाएगा कैसी हालत में है, और अगर कोई ज़रूरत है रिपेयर करने की या मेंटेन करने की तो आप उसको करना चाहिए। और फिर इसके बाद जो रिटेंशन शेड्यूल है उसके हिसाब से जो रिकॉर्ड रिटेन होने उनको रिटेन करें, लेकिन बाकियों को डिस्ट्रॉय करें लीगल प्रोविजंस को फॉलो करते हुए। और जो 25 साल से पुराने हो गए परमानेंट रिकॉर्ड्स हैं उनको आप नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया को ऑफर करें फॉर अप्रेजल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। इसी में आगे ये है कि जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट के प्रोविजंस एक्ट में लीगल प्रोविजंस हैं उससे सबको वाकिफ़ होना चाहिए और ट्रेनिंग सबको लेनी चाहिए। आपके पास जो पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं उनको क्वांटम आप देखें कि कितनी जगह उनके लिए चाहिए, आगे आगे आने वाले सालों में कितनी जगह और चाहिए होगी। उनको कैटेगराइज करें परमानेंट और नॉन परमानेंट रिकॉर्ड्स में, और वीडिंग आउट रेगुलरली करें, बहुत ज़रूरी है। जो रिकॉर्ड्स ऐसे नहीं हैं कि राष्ट्रीय महत्व के हैं, जो ऐसे नहीं हैं जिनको 25 साल के बाद प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, उनको वीड आउट अवश्य करें। ऐसा ना करें कि 25 साल के बाद आप बहुत सारा रिकॉर्ड ऑफर कर दें जिसको हम रखने की स्थिति में नहीं हो। आखिर हम लोग रखते हैं, हम पे लिमिटेड स्पेस और बहुत खर्चा होता है रिकॉर्ड्स को रखने पे। तो जो आवश्यक हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, उन्हीं को हमें ऑफ़र किया जाना चाहिए। और फाइनली ये है कि आप एग्जिस्टिंग जो मैकेनिज्म्स हैं रिपोर्टिंग के उनको फॉलो करें, ताकि अगर आप अच्छा काम करते भी हैं और उसको बताते नहीं हैं तो बेकार है। जो काम अच्छा करें उसकी सूचना भेजनी चाहिए। अब स्पेशल कैंपेन 3.0 लॉन्च हुआ है, मुझे आशा है कि इसमें बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। सर एक छोटी सी मैं अपने ऑफिस की बताना चाहूँगा सर, आपकी अनुमति से। हमारा ऑफिस सर नेशनल आर्काइव्स का जनपद पर एक हेरिटेज बिल्डिंग में है, हेरिटेज कैंपस है, और वहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड्स के रिपेयर करते हैं। उसके लिए स्टाफ बढ़ाने की आवश्यकता थी, तो ये बात हुई कि 500 आदमी हमको बिठाने पड़ेंगे रिकॉर्ड्स के रिपेयर के लिए। उनके लिए करीब 25,000 स्क्वायर फुट स्पेस की ज़रूरत थी। CPWD से बात हुई, बोले साहब आपकी तो हेरिटेज बिल्डिंग है, यहाँ पे हम कुछ टेम्प्रेरी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, कैसे होगा। फिर हम लोगों ने स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर से बात करी, उसके बाद अर्बन आर्ट्स कमीशन से बात करी, बहुत सारे जतन किए सर। फिर ये हुआ कि फाइनली शायद नहीं ही हो पाएगा, तो हम अपने रिकॉर्ड्स को अपने बिल्डिंग से बाहर कैसे भेजें, इस पर हमने सोचना विचारना शुरू किया कि क्या SOP हो सकता है। अल्टीमेटली स्पेशल कैंपेन 3 आया तो ऑफिसर्स ने कहा साहब हम इतनी जगह क्रिएट करके दिखाएंगे, पुराने कूड़े को हटा के, जो हमारे पास पुरानी चीज़ें रखें उनको हटा के 25,000 स्क्वायर फीट ज़मीन हम क्रिएट कर लेंगे विद इन द एग्जिस्टिंग प्रीमाइसेस, कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इस तरह का जोश सर आपके अभियान से सब में भरा है, और सब डिपार्टमेंट्स में ऐसा जोश दिखाई देगा। आई एम श्योर इस बार बहुत बड़े अच्छे नतीजे सामने आएंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for your insightful address. We now move on to the release of publications. I would request all dignitaries on the stage to kindly release the following publications:
Special Campaign 3.0 Guidelines, and the monthly report of Secretariat reforms for June-July 2023. I would like to inform that the soft version of these publications will be available on the website of DARPG, and a hard copy of the same has been made available in their folders to the respected press and media. Thank you, sirs, for the release of publications. The moment has come for us all. We will now witness the launch of the Special Campaign 3.0 web portal. To mark the commencement and operationalization of the Special Campaign 3.0, I would like to request the Honorable Minister of State for Personnel, Public Grievance and Pensions, Dr. Jitendra Singh, to kindly launch the online portal. The address of the portal is scdpm.nic.in, and it is requested that all ministries, departments may kindly upload the target data sets on this portal during the preparatory phase, that is, with effect from today, 14 September 2023 to 30th September 2023. Thereafter, the achievement data sets against these targets are to be uploaded in the implementation phase with effect from 2nd October 2023 to 31st October 2023. Moving forward, I would now like to invite our chief guest, Honorable Minister of State for Personnel, Public Grievance and Pensions, Dr. Jitendra Singh ji, to kindly share his valuable thoughts and address the august gathering. Everyone here have been waiting keenly to hear your kind address, sir. On the dais, Secretary, Administrative Reforms and Public Grievances, whom you heard so passionately, giving you an overview of the past 3 campaigns and the campaign that is being launched today, Mr. Srinivasan. Secretary Post, Mr. Pandey. From Archives, Secretary Mr. Singhal, Milanji, our colleague in the Department of ARPG, JIG, senior officers, representatives from different ministries and departments, and of course, friends from media, without whom this campaign would not have actually been able to launch itself the manner Srinivasji has envisaged. And I'm glad that this event is happening when the entire nation is in an upbeat mood. Just about 3 days back, we had a very successful G20 summit, which was actually an occasion for India to showcase its technological capabilities along with its economic strength, and also to reiterate to the world that gone are the days when India would look for leads. Now India is ready to lead. And that happened close on the heels of the successful landing of Chandrayaan, which has caught the fancy of the entire world. And since by default, I happen to be associated with that, so wherever I go, I'm asked. The question I'm asked is, how could you manage a successful Chandrayaan for 600 crore when the simultaneous Russian mission of 12,000 crore, 16,000 crore lost its way? So
So we have shown to the world the skill of successful, cost-effective missions and cost-effective projects. So it's a good omen that in the backdrop of this we are here today. Just to give you a background of how all this got conceptualized, because I'm one of those few who have been associated right from the day when this thought first arose. Soon after this government came in on the 26th of May 2014, I think it was on 27th and 28th, the Honorable Prime Minister took a round of the North Block, first because that was directly his ministry, and then of the South Block. And later on he said to us कि एक बड़ा अजीब दृश्य देखने को मिला, कहीं 3 टांग का मेज देखा, कहीं 1 टांग की कुर्सी देखी, और हम सब इतने व्यस्त थे कि किसी ने उसको हटाने का भी की फुर्सत नहीं. And then that was a great eye opener for all of us, and then we actually embarked on it, took upon us as a challenge, and we realized there were corridors choked, rooms choked, even in North Block. Many of the rooms which are now being occupied by officers or even by the OSDs were actually full of broken furniture, discarded tables, because we were so busy serving the government, we had no time to take care of the junk. And then very soon, just about 2 months later, the Honorable Prime Minister surprised everybody when from the ramparts of the Red Fort he spoke about Swachhata. That was the first Independence Day address. And many across the country were also taken aback, the Honorable Prime Minister talking about Swachhata and building of the importance of building shauchalayas for women. But soon we realized the importance of it. Within a year, 4 lakh women toilets had been constructed across the country, and it virtually became a mass movement within a few months. And I am witness to that, being an elected representative in my own constituency. We had a small village or a township where a class 9 girl stopped going to the school and she told her parents कि मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना कि हर महिला के लिए शौचालय उपलब्ध होगा, जब तक मेरे घर में शौचालय नहीं बनता मैं स्कूल नहीं जाऊंगी. So we came across this in the social media. I got in touch with the collector. Even the collector was not aware of it. They traced the house, and when we conducted the survey, there were as many as about 200 houses around that house which did not have a shauchalaya. So what a great cue we had received. And that is the whole of government and the whole of nation approach which Prime Minister has been reiterating. Similarly, in the same constituency, in another district, there was an 80-year-old woman. She took upon herself the responsibility of going from house to check whether there were toilets. और देखते ही देखते, because I was saying this the other day during a campaign in Uttar Pradesh कि बहुत सारे लोग हम जैसे जो सेमी अर्बन और देहाती परिप्रेक्ष्य से आते हैं, उन्होंने वो नज़ारा देखा कि किस तरह से महिलाओं को सुबह भोर का इंतज़ार करना पड़ता था, ख़ास तौर से देहातों में जहाँ रेल की पटरी चलती थी. तो सूरज की पहली किरण भी निकली हो लेकिन लोगों की आवाजाही भी ना हो, तो वही समय है उपयुक्त महिला के लिए बाहर निकलने का खेतों में शौच के लिए. तो कितना बड़ा अत्याचार वो अपने ऊपर करती थी और हम उसे सहते देखते. तो कितने बड़े पाप से हमें छुटकारा मिला. एक पुण्य का कार्य हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करने का मार्ग दिखाया, और इस तरह से, और वहाँ पे उसका नाम भी इज्जतगर रखा गया. And in fact today we have more than 10 crore such toilets built across. Even in my own constituency on the international border, I got about 600 toilets built in each of the houses through the Sulabh Shauchalaya, because the dual constraint there was that women could not even go outdoors because there used to be cross-firing anytime from the Pakistan side. So it's been such a revolutionary opening, and sometimes I wonder why for 70 years this thought did not happen to any government. जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वही व्यवस्था है, वही अधिकारी. Maybe we were waiting for the right kind of leadership to give us this cue.
And today, as I said the other day, a woman toilet is not simply a woman toilet. इसमें सुविधा भी है, सुरक्षा भी है, सम्मान भी और स्वास्थ्य भी है. सुविधा तो ही है, सुरक्षा भी है, सम्मान है, तभी उसको इज्जत घर कहा गया किसी किसी प्रदेश में. और स्वास्थ्य, because one of the commonest causes of urinary tract infection happening in women were that they were not able to ease themselves when required. And that too in the young adolescent girls. So I think why I'm saying so is that when we are into campaign as a whole government and all the ministries involved, these are some of the aspects which we need to highlight so that we get the involvement of every section of society. Now, what has this campaign done precisely as far as the government is concerned? So being a student of science and a compulsive researcher myself, I think I'll place before you 3 or 4 outcomes which have been very essential, which we don't realize, which have happened in our lives as part of the government. First, that it has led to a change of the work culture. पहले ये था कि सरकारी अधिकारी जो कामयाब है, जो बहुत ज़्यादा सेवा करता है सरकार की और राष्ट्र की, उसके लिए प्रतीक ये है कि उसका टेबल भरा हो फाइलों से, और जो उसको मिलने जाए उसको झांकना पड़े फाइल के आगे पीछे से, कोई चेहरा भी ना दिखे. Since I have had the experience of working in different capacities in private sector, public sector, advisories, finally into a political establishment. So when I took up a government job as a youngster, I think I was hardly 23, 24, soon after MBA, because then I went for the post-graduation and all. You know, we used to take a leave and go. So I was very new and I didn't know what to do. So when I put in my joining report, I was looking around for someone who could be familiar. Suddenly I came across a gentleman, Sardarji, who was my senior in the college. So I heaved a sigh of relief. बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मैंने joining report दिया. बोले बैठो बैठो चाय पियो. मैं कहा नहीं सर, मैंने आपसे पूछना है कि यहाँ क्या कामकाज का क्या सिलसिला रहता है, क्या करना. बोले भाई एक बात गांठ बांध लो, whether you work or not in a government setup, you have to appear to be working. And I tell you honest, this was the first lesson taught to me when I put in my first joining report in a government job as a medical officer. और मेडिकल ऑफिसर के लिए हाउ टू अपीयर, कि भाई तुम्हारे टेबल पे बहुत सारे जर्नल्स पड़े हो, पढ़ो कि ना पढ़ो, मेडिकल जर्नल तो होते ही हैं, ढेर पढ़ो जो आएगा देखिए. और अगर कभी तुम उठ करके चाय पीने बाहर जाओ तो अटेंडेंट को ये हिदायत करो कि ये ना कहे कि चाय पीने गए, कहे कि वो पेशेंट देखने वार्ड में गए. और उसी की आड़ में कई लोग उन दिनों सिनेमा देखने भी चले जाते थे. And I'm telling you this because I have lived through this. Many of us, the oldies, must have gone through this. And therefore, this is a huge work culture now, which has happened now. It is no longer your identity, which was in fact a misguided, pervert identity which had got fixed to us. We have been able to get rid of this. And the outcome of this, very recent, is the G20. Only yesterday somebody was telling me कि साहब G20 जिस तरह से हुआ है, without any hassles, uneventfully, ऐसा लगता ही नहीं कि सरकारी इवेंट है. साहब इसका क्या मतलब? साहब सरकार में इस तरह का स्मूथ कभी इवेंट नहीं होता था. कहीं कांच टूटता, कहीं ग्लास गिरता, कहीं बल्ब फ्यूज हो जाता, कुछ ना कुछ तो होता, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. So what I am trying to say is that we have actually evolved through this. The second outcome is that we went online when we realized the virtues. Because as I said in the first campaign, when we started in the north block, we had as many as 30,000 files, which were redundant, full of dust. And as a medico, I told some of the women colleagues, I said, do you know when you go home and you feed your children, you feed all this with these microbes. And everybody took upon it very passionately. So we were also got prompted to go online. And the result was that by the time COVID happened, we were already 90% online. When Prime Minister pushed in Digital India, neither he nor we would have visualized that COVID was in the offing. Nobody in the world did. But the advantage was that when COVID did strike us, our work did not get interrupted even for a single day.
And one of the junior officers in the Ministry of Personnel told me, sir, the new queue should be, the new dictum should be minimum attendance, maximum output, because our colleagues are working even on Saturdays and Sundays. तो हमारा ऑनलाइन काम भी चढ़ा, हमारी एफिशिएंसी भी चली और हमारे स्वभाव में परिवर्तन आया. The third, of course, the use of open spaces, as Mr. Pandey was telling you, solar panels बनाए from junkyard to courtyard, and that too happening in a post office. Because as children, as youngsters growing in formative years, the image fixed of a post office was when you go there, you have huge lot of pile of envelopes. Now तो वो मतलब post office जो है वो कोई बहुत active post office नहीं है. तो जहाँ भी जाए वहाँ पर वो ढेर लगा हो. इन्होंने उसकी image बदल दी. So I think this, keeping in the times that we live in, the huge lot of makeover, a junkyard in a post office getting converted into a courtyard. And something which was identified with our work culture is no longer in fitness with the contemporary times, is what we realized. Once we were in first year of college, तो हम थोड़े से, because जब कोई guidance नहीं हो पीछे से तो आदमी शरारतों से ही सीखता है. तो हमारे कुछ लड़कों ने कहा, साहब ये जो विविध भारती सारा दिन बजता रहता है, ये सारा झूठ है, ये फरमाइश का प्रोग्राम, कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं लिखता. तो सूझ गई, उन दिनों कोई सिक्योरिटी हुआ नहीं करती थी. तो 5-7 हम लोग पहुंच गए आकाशवाणी भवन. तो बोले, साहब ये देखने आई जो फरमाइशी प्रोग्राम है, तो कौन भेजता है फरमाइश, आती भी है कोई किसी को? तो वहाँ पर एक मैडम थी, वो तब अनाउंसमेंट के उन्होंने बंद किया, बोले ले गई अंदर कमरे में. अरे देखा कमरा भरा हुआ लिफाफों से. बोले देखते हो ये है सारी चिट्ठियाँ आई हुई, ये गीतों की फरमाइश है. अब थी कि नहीं थी, लेकिन हमें विश्वास हो गया. हमने उस इमेज को बदला. आई एम गिविंग यू सम ऑफ द साइंटिफिक आउटकम्स व्हिच हैव हैपेंड जस्ट विद इन 8-9 years with 3 campaigns. And for the archive culture, which Srinivas ji now showed that letter of 1947, because I have some kind of an aptitude for books, so we discovered that. And as Mr. Singhal very nicely pointed out to you, how they have also changed their approach. कई ऐसी किताबें जिसमें किसी का लिखा हुआ नोट पड़ा हुआ है 40 साल पुराना. We have a meeting at 10 PM. मैंने भेजा श्रीनिवास साहब को. श्रीनिवास साहब ने अपनी किताब में मार्कर के तौर पे रख दिया. बाद में मीटिंग भी हो गई, वो भी सेवानिवृत्त हो गए, हम भी गुजर गए. 40 साल के बाद किसी ने किताब खोली, वो नोट पड़ा है. It's actually there if you go back to the, because we forgot what markers पड़े हैं. वो एक अहमद फराज का शेर है कि जैसे कि सूखे हुए पत्ते किताबों में मिले, क्या मिले तो ख्वाबों में, बिछड़े तो ख्वाबों में मिले. तो ही गिव्स दैट सिमिली कि कई बार वो पत्ता रख देते थे किताब में एज ए मार्कर, बाद में भूल गए, वो पत्ता भी सूख गया. सो नाउ वी हैव गॉट डिजिटलाइज्ड, वी हैव गॉट ऑनलाइन, एंड दिस स्वच्छता कैंपेन एक्चुअली प्रॉम्प्टेड अस to do all that. And a huge fifth outcome is the huge lot of competitiveness. When we completed this campaign last year, we held a small get-together of all the government colleagues in the North Block. And it was primarily organized by our women officers and officials. And they came out and said कि जो 600 करोड़ रुपया श्रीनिवास जी सिर्फ टूटे हुए मोबाइल और टूटे हुए स्क्रीन बेच करके कमा गए, हमें वो एड्रेस चाहिए जहाँ ये असेंबलिंग होती है वो खरीदते. तो हमने कहा हमें आपको इसमें क्या दिलचस्पी है? बोले साहब हमारे यहाँ तो बच्चों ने इतने फेंके हुए. एंड आई एम श्योर दिस मस्ट बी एक्सपीरियंस ऑफ मोस्ट ऑफ यू सिटिंग ओवर हियर. बोले हर चौथे दिन वो कोई बच्चा ले आता है नया स्मार्टफोन और पीछा कहाँ फेंका ना कोई इसको देखता है. हमें तो मालूम ही नहीं था कि ये भी बिकता है. सो इट हैज़ एक्चुअली गिवन अस an opportunity not only to reform ourselves, not only to get into a different kind of culture, but also to engage ourselves in a different kind of an approach with a new outlook. And therefore, I think we owe it to Honorable Prime Minister. He gave us this concept of Swachhata, which possibly, like many of his other cues, was not understood
that easily to begin with, but gradually we have it now. And about 300 best practices Mr. Srinivas has identified. Some of them would be put on the social media as well. And I'm sure he will also announce the calendar that we have for. And why we are here today is that to tell you that this is a whole of government approach. It's incidental that ARPG is a nodal department, but it would not be left to him alone. Just as while announcing the successful launching of Aditya from Sriharikota, I had said, though the launching was executed by ISRO, but the mission was whole of science. Because you had collaboration from IIT Madras, IIT Kharagpur, Tata Institute in Pune, and a whole lot of institutes. So similarly, unless all of us join hands, and not join hands because it's a government assignment, क्योंकि फिर वही होगा, to appear to be working, as I said. But to join hands because we think this is something which would do value addition to our own personality, both within the office, outside the office. Because much of what happens in the office is carried outside the office, and much of happens outside the office is carried into the office. So with that kind of spirit, I'm sure we will be able to move forward. And the media persons here will also find some time to us, though we will not be abusing each other because that makes a breaking news. But without abusing, we will be functioning. नहीं तो मेरा मज़ा आता है उसने गाली दी तो आपको कैसा लगा? वो कहता मुझे बड़ा अच्छा लगा. So we would not be engaging in that, but in the spirit of complementing each other, we would be working, and I'm sure all of us will be cooperating with each other. Thank you very much. Thank you, sir, for your valuable time and inspiring address. It is your guidance and support which has enabled our department to launch the nationwide special campaign 3.0 today. So, I would now like to request Principal Director General, PIB, Shri Manish Desai ji, to kindly conduct the interaction with media. Namaskar. On this momentous occasion of launch of Special Campaign 3 portal by our Minister, Dr. Jitendra Singh ji. I mean, we saw what in media parlance call as success stories, be it of the government offices, the railways, the post, the National Archive of India, I mean, which have presented kind of a changing perception, a picture of new India. And this has been possible by the twin engines of motivation and monitoring. And in this regard, the departments under Dr. Jitendra Singh have played a stellar role. The motivation, as you all know, came, and the seed of which was sown by Honorable Prime Minister of India in his inaugural Independence Day address. Today I am very glad that in this composite program, the Minister has agreed to take a few questions from the media, but let us confine them to government activities, the successes which we have achieved so far, and such things. And I would request media persons to identify themselves and then ask the questions, please. Yes, I mean, we may begin here. Row number 3. नमस्कार सर, ये काफ़ी अचीवमेंट देख रहे हैं और काफ़ी अचीवमेंट हो रहे हैं. लेटेस्ट अभी पोस्टल में अभी कल ही हम लोगों ने बड़ा अचीवमेंट G20 है, इससे पहले कई अचीवमेंट हुए, वो अभी मेंशन क्यों नहीं किया? नंबर वन, जो अभी स्वच्छता अभियान जो पहले जो चलाए गए थे वो वहीं के वहीं रुक गए और अभी स्थिति और ज़्यादा ही ख़राब होती जा रही है. कई स्टेटों में प्रैक्टिकल देख के बता रहा था. नहीं, अभियान रुके नहीं है, ये दरअसल वही उसी श्रृंखला का हिस्सा है. स्वच्छता 1, स्वच्छता 2, स्वच्छता 3. दूसरा, ये चूँकि कार्यक्रम विशेषकर डेडिकेटेड था स्वच्छता के लॉन्चिंग को, और हमारे नए डीजी साहब देसाई साहब की लॉन्चिंग भी हुई है इसी में, तो इसलिए हमने बहुत ज़्यादा G20 और चंद्रयान तक सीमित रखा, वरना पूरा दिन हम गिनवा सकते हैं उपलब्धियाँ, क्योंकि उसके लिए एक अलग कार्यक्रम की आवश्यकता रहेगी. लेकिन हाँ, जो आपने कहा कि कहीं एक प्रदेशों में वो बात
कही जा सकती। कुछ एक प्रदेशों में शायद उस तरह की आपको लगता हो गति नहीं पकड़ पाया अभियान जिस प्रकार से केंद्रीय कार्यालयों में, तो उसके लिए हमें आपकी और मीडिया का भी सहयोग अनिवार्य रहेगा। और जहाँ तहाँ ऐसा आपको नज़र आए, आप कृपा करके हमारे नोडल ऑफिस के ध्यान में लाइए, हम उनको भी मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि मीडिया का अगर एक बहुत बड़ा हमें योगदान ये रहेगा कि अगर आप मास कैंपेन को जागृत करने में, क्योंकि उससे ये काम स्वयं स्पॉन्टेनियसली चलेगा। दैट ब्रिंग्स टू माई माइंड, जस्ट लास्ट ईयर आई वॉज in a very big scientific institute in Pune, very famous, you don't have to, and all the senior scientists were there. They were actually making presentations about their achievements. So suddenly a young girl who was a scholar, a student, walks in, says, I want to say something, I want to say something. और वो सारे चौंक गए and they were actually trying to contain her. लेकिन अब आजकल के ज़माने में बच्चों की तरबियत ऐसी होती है कि माँ बाप भी कहते हैं खुल के बोलो। टीचर तो वो हमारा ज़माना नहीं रहा कि वो उस्ताद को दूसरे कोने से देख के भाग जाते थे। तो वो अंदर आ गई, शी वर्चुअली बाज्ड इनटू द हॉल जहाँ पर। तो मैंने कहा उनको डायरेक्टर साहब को नहीं बोलने दो, बिकॉज एंड देन शी सेड नो, आई जस्ट वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट वी डोंट हैव अ वेंडिंग मशीन फॉर दिस सैनिटरी नैपकिन्स व्हेन द होल कंट्री इज वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। तो मैंने फिर डायरेक्टर साहब से कहा, मैंने कहा नहीं, व्हाट द स्मॉल गर्ल इज, लिटिल गर्ल इज सेइंग इज क्वाइट डूएबल। तो कहा हम कर देंगे, एंड देन आई बिलीव दे आल्सो डिड। सो इस तरह से हमें इनपुट्स आपसे भी आए और जागरूकता का भी काम आपके सहयोग से हो, बिकॉज एज आई सेड ये सबका मिला जुला अभियान रहेगा। So this is, I'm Sanjay Agarwal. Congratulations to all the ministers and all the secretaries present here. So sometime when Mr. Modi had joined office, so I had written a letter and I just wanted to convey today, because this campaign, अभी आप लोग वो brochures खोल रहे थे, the rappers, so a lot of manpower time is being wasted, you know. The rappers are getting stuck. So this is one suggestion, sir. Secondly, when मन की बात की बहुत सारी publication media center में नीचे रखी है, I think even the media center needs to be cleaned up, and the secretaries need to, you know, see that how many things have to be published, because scrap page के तो खाली 1/10 cost आ रहा है, sir. उसको publish नहीं, well taken. I think we'll follow all of us. In fact, even I am not in favor of this. एक और हमने किया है, just to add to what you said. Every day, if you take पूरा सरकार का, I think at least 100 mementos are distributed. If you take it, and that also becomes a junk. So at least in the departments that I have connected to, we have started distributing books, giving books as mementos, and trying to choose the subject of the book depending upon the subject of the program. Like we did Good Governance Day, so we got Vajpayee ji's books. When we have a science-related program, we got books. Recently, we had one of the very recent biographies of Homi Baba has come in. So that way, at least जिसको दिया वो नहीं पढ़ेगा तो किसी और को देगा. But I think that's well taken. We're gradually actually moving in that direction. Sir, I think, what he said about the media center, I'll take it as my task under Special Campaign 3. Yeah, only media center, not the others. Thank you. Other questions, please? Anything? Yes, please. First, front row. Yeah, first I would like to, in fact I could have said there itself, we are launching, but this is not starting. I mean, you are launching the third phase. When you launch a campaign close to Gandhi Jayanti, that has been a date sacrosanct to them, identifying with Gandhiji's passion for cleanliness. We are just reiterating ourselves to this cause. But the campaign has to go on all the 365 days. I think that is also must be the vision of Prime Minister when he spoke about it. It's not that, it's like shaving your beard. You don't shave only on Gandhi Jayanti. You do it every day. So it's only because close to Gandhi Jayanti, इन्होंने ये रखा है कि, because why not, then in that case the question would be why then today? Because 2nd October तक ये उसका एक groundwork करेंगे. सारे preparatory, sensitizing all the departments, sensitizing all the ministries, sensitizing state governments,
as you rightly mentioned, rural areas as well as different offices across the country. So 15 days they'll spend doing that, maybe through video conferences, through correspondence. And second, so that everybody rededicates himself across the country. You want to add to something to what he said about the rural and the other areas, how it's going to be a pan-India thing, preparation? The approach of Special Campaign 3.0 is saturation. So that is how the number of offices that will be taken up has been taken up at 1.5 lakhs. Department of Posts alone has 1.65 lakh post offices across India. Railways has more than 12,000 railway stations. Similarly, we have identified with Krishi Vigyan Kendras, with Department of Telecom, similarly pharmaceuticals. Defense is a big priority area across all cantonments. Ministry of Home Affairs, through all their CAPFs, deployments from Dras in north to Puducherry in the south, from Itanagar in the west to Loonkaran-sar, from Itanagar in the east to Loonkaran-sar in the west. So across India, it will be a movement. I think what is important is, I think we should take that in right spirit. In the rural areas, we could also have some programs done in the schools. So the children get involved. Once the children get involved, they motivate the parents as well as the elders. And last year, we had a beautiful experience with Swachhata, Surakshit Sagar Abhiyan, which launched for 75 days, 75 locations across the country, along the 7,500 kilometer coast of India. And that was to culminate on the 17th of September, where on which date we had a mega program in all of these locations. And by the time we reached 17th of September, virtually all the places had been left clean. So that day I was at Juhu, so I called up all the, prominent residents. One of them was Mr. Sunny Deol, who's known to me otherwise. So I told him, okay, spend some time and come here. वो कह लगे जी मैं आ तो जाऊँगा, लेकिन आपके लोगों ने इतनी सफाई कर दी है वहाँ उठाने को कुछ नहीं रहा. So that is because everybody got involved with that. In the Madras beach, Iliad's beach, we found a film unit, a troupe of girls who had come there to shoot a dance sequence for one of the movies, later on got engaged in picking up all the junk from the seaside. So I think that is what is finally should be the objective. Next question, from the 6th row, please. सर नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप है, टोटल न्यूज़ से. सर जितेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है कि जो निस्तारण करने के लिए कचरे का और जिस तरीके से फाइलों का निपटान करने के लिए जो रणनीति है, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? क्या इसके लिए नीति तैयार की गई है कि सरकारी फाइलें कौन सी निपटान में जाएंगी और जिनका ढेर लगेगा वो कौन सी निपटाई जाएंगी? तो इससे एक आपने जानकारी ये भी दी है कि बड़ा पैसा भी आया है मंत्रालयों को अलग अलग. ये जो आपने पूछा, ये प्रश्न बड़ा टेक्निकल है. वास्तव में हमारे व्यवस्था में उसका पहले से प्रावधान है कि कितने सालों के बाद कौन सी फाइल कहाँ भेजनी है. उसको आर्काइव्स में रखना है, कॉन्फिडेंशियल में रखना है. यू कुड स्पेल दैट आउट. So third row, 244, please. Okay, I'm so sorry. Okay. There are 3 categories of files. Every department में record rooms में files रखे रहते हैं, sections में रहते हैं. जो C category files हैं, ये लगभग 1 साल तक retention है. After 1 year, C category files are weeded out. B category files वो हैं जो historical value के हैं पर department में रखना चाहिए, तो इनका review किया जाता है. अगर C से B भी upgrade करना है तो हर record officer, जैसे DG साहब ने बताया कि every department में section officers, under secretaries, records officers हैं, तो ये evaluate करते हैं and then preservation के लिए रखते हैं. A category files 25 वर्ष तक विभाग में रहते हैं और 25 वर्ष के बाद अगर historical value के files हैं वह National Archives of India में after due appraisal transfer कर दिए जाते हैं. So Minister that is sir, the process. Minister sir, if you permit, we can just take one more question, please. लेकिन what was happening is, अब इससे क्या हुआ कि ये जो श्रीनिवास साहब ने टाइमलाइन बताई है वो भी कहीं हमसे चूक गई थी. अब ये 1947 का जो इन्होंने पत्र बताया ये उस कैटेगरी का नहीं था. ये सिंपल कॉरेस्पॉन्डेंस बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी जो उन्होंने सजेस्ट किया कि एक एस्टैब्लिश्ड ऑफिसर की पोस्ट क्रिएट करनी चाहिए.
ना ये बहुत ज़्यादा आर्काइव वाली बात थी ना, लेकिन चूंकि इसकी खोज 70 साल के बाद हुई तो इसी हमें लगा कि देखने लायक है. I mean, it is a reflection on our working. ये हो रहा. So we revisited it. Yes, sir. Please go ahead. Namaskar. ये संजीव शेखर from आर्यावर्त. Good governance, sir. It is your part of administrative reforms and grievances. तो ये स्वच्छता अभियान के साथ साथ क्या ऑफिसर्स का भी गुड गवर्नेंस का भी हुआ है? उसका पैमाना कभी नापा गया है क्या कि केवल एम्प्लॉइज का ही दारोमदार पर ये गुड गवर्नेंस हो रहा है? बहुत हुआ है एक्चुअली. आज ओकेजन कभी नहीं उसका है, भी नहीं तो हम इसके लिए पूरा दिन रिपोर्ट कार्ड जारी हो. बिल्कुल बिल्कुल. 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे पर हम करते भी हैं, हम पूरा इसका कर सकते हैं. और अगर अभी भी बोले तो 1 घंटा कम से कम और चाहिए, केवल हम मोटा मोटा बुलेट पॉइंट ही दें. जैसे आपने कहा कि ग्रीवेंस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो इन्हीं का महकमा है. सन 2014 में मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ, पूरे सरकार भारत सरकार में कुल मिलाकर के पूरे साल भर में शिकायतें 2 लाख आती थी, केवल 2 लाख. बाकी सारा समाज मुतमईन था, संतुष्ट था. आज 22 लाख 20 लाख. किसी ने पूछा कि साहब इसकी मतलब आपकी शिकायतें ज़्यादा हो गई आपको? मैं कह रही वो गालिब कह गए थे कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब क्यों किसी का गिला करे कोई. वी आर प्रॉम्प्ट, वी आर रिस्पॉन्सिव, वी आर फॉलोइंग टाइम लाइन. 95% ग्रीवेंस हर. और अब इन्होंने क्या किया कि स्टेट्स को कनेक्ट कर दिया, और हमने वो स्टेट्स शुरू की जिनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं. जब 2014 में हमने थोड़ा सा स्टडी किया तो बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थी जिन्हें मात्र औपचारिकता के लिए वेबसाइट बना दी थी, लेकिन वेबसाइट को 2-2 साल विजिट नहीं थे करते, तो लोग शिकायत दर्ज कराना बंद कर दें. तो नेचुरली जब तक कि सिटीजन पार्टिसिपेशन नहीं होगा गुड गवर्नेंस नहीं आएगा. ऑनलाइन के साथ सिटीजन पार्टिसिपेशन, तो उसमें इधर उधर ह्यूज लॉट ऑफ पेंशनर्स को लेकर के, इनके पास पेंशन का विभाग है. पहले आप बुजुर्ग पेंशन को डॉक्टर के पास जाना पड़ता था लेने के लिए सर्टिफिकेट. तो मैंने कहा साहब मौत का तो सर्टिफिकेट लेते हैं, खुद ना लो तो खुद तो नहीं लेते, घर वाले लेते हैं कि इंश्योरेंस वगैरह के इसके पैसे निकालेंगे. तो ये तो इट्स क्वाइट इनह्यूमन. उसको हमने ख़त्म किया, उसकी जगह हमने विकल्प दिया डिजिटल सर्टिफिकेट. अब उसका भी और विकल्प आ गया कि 80 बरस के बाद शायद हाथ की लकीरें बदल जाती है. तो वी आर अमंग द फर्स्ट इन द गवर्नमेंट पॉसिबली टू इंट्रोड्यूस फेस आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी विच वाज मोस्टली यूज्ड इन द क्राइम वर्ल्ड. तो उसने कुछ नहीं करना, बुजुर्ग ने ऐसे अपना चेहरा देखना कैमरे में, आधार के साथ वो वेरीफाई हो जाता है चेहरा, विद इन 60 सेकेंड्स उसके बैंक में. तो बहुत सारी इस तरह की रिफॉर्म्स हुई हैं. कोई और मौका मिले तो हम उसकी भी बात करेंगे. Right. Thank you, Minister Sir, for your time, taking out time for media interaction. I would request the anchor to proceed with the further program. Thank you all. In conclusion, I would like to say that let's unite with due diligence and commitment to make this special campaign 3.0 a big success. Your presence and cooperation makes this event more special, and I am grateful to have each and every one of you here in our midst. Please join us for lunch at the 4th floor. Thank you.